So yes, we have seen that gravitational field, its definition, as it is the space around the body within which its gravitational force of attraction can be experienced, is called a gravitational field. Its expression is E is equal to minus gm upon r square, and we have defined the potential as gravitational potential as the work done in moving unit mass from infinity to the any point in the gravitational field of a body is called the gravitational potential at that point due to the body. Okay, so gravitational potential of a body is given by V is equal to minus gm upon r. So in potential we have just r in the denominator, and for the expression for field we have r square. So this is to be remembered. Okay, so this gravitational field is nothing but it is the gravitational force per unit mass. Okay, this is nothing but the gravitational force per unit mass, and it is the work done per unit mass. So that is to be remembered, work done per unit mass. So relation between gravitational field and the potential, as I said, E is equal to minus gm upon r square, V is equal to minus gm by r. Therefore, E is equal to minus dV by dr. Gravitational potential energy is nothing but the gravitational potential multiplied by mass. So, while defining the gravitational potential, we define the work done by unit mass. Okay, but here for the entire mass, it is a gravitational potential energy. So if you multiply with if you multiply the mass with the gravitational potential, you will get the gravitational potential energy. So like this. Okay, so it is U is equal to minus gm by r is the gravitational potential multiplied by mass m. So that will be the gravitational potential energy. Similarly, one can define the gravitational self energy is nothing but the if the body is composed of several masses. Okay, so to get together, certain work has to be done, and that work is stored as a energy, and that is called the gravitational self energy. Okay, so self energy of a body is equal to the work done by gravitational force in bringing infinitely small masses that are initially at infinite distance from one another to a point where the body is formed. So this example, yes, the radius of Earth is 6.637 into 10 to the power 6 meter. Its main density is 5.57 into 10 to the power 3 kg per meter cube, and the gravitational constant is, yes. So calculate the Earth's surface potential. Yes, सर लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन किए थे सर. किए थे. Okay, we'll go to the next. Okay. Calculate the intensity of gravitational field at a distance. 0.2 meter from the surface of solid sphere of mass 20 kg 20 kg and radius 20 centimeter, given that g is equal to this much. सर ये वाला ये क्वेश्चन भी भी किए किए थे. थे. So you will use which formula? E is equal to minus gm upon r. r. Yes, very good. सर ये So वाला हो गया. let me know the first answer.
Answer of the first example, let me know. Sir, minus 6.8457 into 10 raised to power 7. Minus 6 point, please Eight. repeat. Sir, minus 6.8457. Into 10 to the power 7. 7 units. Sir, kg per meter. We are calculating the surface potential. Surface potential has units. Newton meter per kg. Newton meter per kg. Yes. Okay. So, any other one who confirms the same answer? ऐसा 6.8 उतना ही आया था 6.8 into 10 के पास 7. Okay, it may be 6.8 into 10 to the power 7. Okay, it's okay. You practice problems as much as possible, so that will clear your concepts. And you will understand the subject with a depth if you go through the numerical problems. That gives the clear concept. So you have to solve the problem, calculate the intensity of gravitational field at a distance 0.2 meter from the surface of solid sphere of mass 2 kg and radius 20 centimeter, given g is equal to this much. So here distance will be 0.2 meter and radius is again, if it is to be converted into meter, it is again a 0.2 meter. So 0.2 meter plus 0.2 meter. So it will be 0.4 meters. Distance will be 0.4 meters. So can anybody give the answer? Sir, E equals to minus 8.33 into 10 raised to power minus 9 Newton per kg. Minus 8.33 Yes, sir. into 10 to the power Minus 9 minus 9 Newton per kg. Newton per kg. Yes, sir.
Can anybody repeat the answer? So 8.33 into 10 to the power minus 9. Yes. Anybody from girls? Are you solving or not? Yes, sir. The answer is 8.337 into 10 raised to power minus 9. Okay. Okay. Yes. Suppose that the two objects attract each other with a gravitational force of 20 units. If the distance between the two objects is doubled, what is the new force of attraction between the two objects? Five meter. 5 unit. 5 units. Yes, sir, 5 unit. So 5 units, sir. Yes, sir. 5 units. Five units. समय लगना चाहिए ना. हेलो. सर 5 unit. Yes, sir. 5 units are there. मुझे आप बताने में क्यों हेजिटेट कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा. सर बताए. सर बताया था ना सर. अभी मैंने पूछा ना. नहीं सर, सर पहले ही आपकी बता आवाज नहीं दिया. आ रही पहले थी ही सर. बताया. 2-3 बार बताया. आपका आवाज तो मैं सुन रहा हूँ ना. सर आपका आवाज नहीं आ रहा था. हाँ, चलो ये बताओ फिर जल्दी. सर 80 यूनिट्स. 80 units. ओके.
नेक्स्ट। Sir, 80 units. Sir, 80 units. 80 units. अंशी, Yes, sir, 80, 80. Yes, sir. इसका भी Yes, sir. दूसरे का 80 बताया था ना आपने। Yes, sir. If two objects attract each other with gravitational force at 20 units, if the mass of both objects are doubled, ठीक है, ये भी 80 है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। Sir, remain same. सर 20 आएगा। ओके ओके, वेरी गुड। 45। सर 45। 45, ओके। Yes, sir, 45. 6.66. Yes, sir, 6.66 units. यस सर 6.66। That is 20 by 3, okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ये suppose that two objects each of mass 1 kg separated by distance r attract each other with a gravitational force F. Plot the graph between F along y-axis and distance r along x-axis. सर पैराबोला। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस r क्या लेना है, पहले 1 मीटर लेना है, 2 मीटर लेना है, 3 मीटर लेना है, ऐसे 10 वैल्यूज लेना है और इसका करस्पॉन्डिंग फोर्स आपको कैलकुलेट करना है और उसका फोर्स के वाई एक्सिस के अलग फोर्स और एक्सिस के अलग आर, ऐसा प्लॉट आपको करना है। ये आप मुझे फोटो निकाल के सेंड कर दीजिए, ठीक है। Okay, sir. हाँ, यस। How would I my weight change if the mass of Earth is increased by 10%?
Sir, weight will also change and it will be also increased by 10%. Yes, that's very right. Okay, weight also will increase by 10%. Yes. Calculate the force of gravitation between two cars 5 meters apart. The masses of cars are 1000 kg and 12,000 kg. Sorry, 1000 kg and 1200 kg. G is given as 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. So these are the questions from the previous year university examinations. Okay. Three point 196 into 10 to the power minus 6. 3.20 into 10 to the power minus 6. Yes, sir. 3.201. Yes, sir. 3.2 minus 6. Okay, 3.19 or say 3.2 doesn't matter. It would into 10 to the power minus 6 Newton. Okay, next one. 6.67 into 10 to the power minus 11. 6.67 to 10 to the power minus 11. Yes, the answer will be same as G. That is 6.67 into 10 to the power minus 11. Okay. 11 Newton only. Okay. Yes, so these are some characteristics of gravitational force. Okay, we may discuss here. Gravitational force is the one of the four fundamental forces in nature. कौन से है four fundamental forces? किसी को याद है? किसी को मालूम है? Four fundamental forces. Strong electrostatic force, strong nuclear force, weak nuclear force, and gravitational force. देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे हम अभी. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलने के बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, तो दीज आर द फोर्सेस. और सबसे ये इन सबसे कमजोर जो है, वीकेस्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, among the fundamental forces, the gravitational force is the weakest force. Gravitational force between two bodies is mutual, है कि नहीं? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है कि नहीं? With same magnitude but in opposite direction. The gravitational force between two bodies constitutes an action-reaction pair of forces. Galileo showed that the gravitational accelerates all the bodies objects at the same rate. Yes, so these are some characteristics of gravitational force. So today we will see the gravitational potential and intensity due to spherical shell. Okay. Before that, I would like to make it clear that in syllabus it is not mentioned for the spherical shell. हमको सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ही लिखा है सिलेबस में. लेकिन फिर भी चलो हम पढ़ लेते हैं. ठीक है, जिनको लगता है
कि ये नहीं पढ़ना चाहिए तो वो अपना ध्यान हटा सकते हैं, लेकिन अपन पढ़ेंगे क्योंकि ये आपको आगे काम में आएगा। और स्फीयर का भी जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका कंसेप्ट हमको ये रहेगा। सो दिस इज द स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल मतलब क्या है कि इट हैज ए surface only. Okay, the matter is distributed along the surface only. ठीक है, आप लोग सुन रहे क्या? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. स्फेरिकल शेल मतलब जिसमें मटेरियल इज अलोंग द सरफेस ओनली, अंदर में कुछ नहीं रहता है, अंदर में हवा रहता है। जैसे वो प्लास्टिक का बॉल रहता है ना, है कि नहीं, वैसे। तो द मैटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द sphere. Okay, so if such is the body, then what will be the gravitational potential and gravitational intensity at a certain point, say? Okay, so we have considered a point P outside this sphere. Okay, so as shown in figure, so this is the point P outside this sphere. This is the spherical shell. Okay, so this is the point P at which we have to measure the gravitational potential, or say gravitational intensity. And this point P is at a distance r from center of the body. So distance OP is equal to r. Remember, distance OP is equal to say r. Okay, so this is the spherical body, due to which here the gravitational potential and intensity is to be measured. Okay, now this is point B, we can say. Okay, this is point say K. So this is the spherical shell, we will define later on. Okay, now consider A. Now this is the point B. Now this is the spherical shell. Okay, now OC is the radius, OE is the radius, and radius of this sphere is say A. Okay, now out of this spherical shell, okay, out of this entire, this is the entire sphere. Okay, at a distance r, there is a point P where one has to find the gravitational potential. Now out of this sphere, तो consider a circular slice, है कि नहीं, यानी ये स्फीयर को ऐसे हमने काट दिया, ऐसे हमने काट दिया, तो हमको एक सर्कल मिलेगा जिसका विड्थ कितना रहेगा, EC, जिसका विड्थ इतना रहेगा EC, और ये सर्कुलर फॉर्म में रहेगा क्योंकि ये स्फीयर है ना, ये स्फीयर है तो हमको सर्कुलर फॉर्म में मिलेगा। वो मैं डायग्राम में बताऊंगा कि कैसा रहेगा सर्कल। तो ऐसा एक हम सर्कल लेंगे, ठीक है, यानी स्फीयर का ही वो पार्ट रहेगा, और उसके वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पर कितना है वो हम पहले फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये देखो, दिस इज एंगल थीटा इज COK, ओके नहीं, दिस इज एंगल थीटा, और ये जो EC जो है, EC मेक्स एन एंगल D थीटा, ये स्मॉल एंगल इज D थीटा, ओके, which makes at the center, EC makes at the center. ये इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है कितना है, ये दिस इज रेडियस A. ओके, नाउ अगर रेडियस A है तो ये EK तो फिर ये CK कितना होगा, CK विल बी इक्वल टू ये एंगल थीटा है, दिस इज थीटा, दिस इज A, तो दिस CK विल बी इक्वल टू A sin theta. A sin theta. CK will be A sin theta. मतलब क्या है कि ये जो हमने सर्कल लिया है कि नहीं, सर्कुलर स्लाइस जो लिया है, उसका रेडियस कितना रहेगा, A sin theta, है कि नहीं, उसका रेडियस कितना रहेगा, A sin theta. ओके,
तो in this way we may calculate like this. Okay, तो thickness of the slice is CE is equal to A d theta. अगर हम EC अगर thickness लेंगे तो that will be ये d theta है, तो A into d theta है कि नहीं? ये तो है arc is equal to radius into this small angle d theta. Radius of circular slice CK is equal to A sin theta. Circumference of circular slice is 2 pi A sin theta. अगर इसका circumference लेंगे सर्कल का तो that is 2 pi A sin theta. And surface area of circular shell, ठीक है, is equal to उसका circumference multiplied by उसका width. ये width है, इसको multiply करेंगे तो you will get the 2 pi A square sin theta d theta. And उसका mass of circular slice is equal to this much. ये density है, surface density यानी mass per unit area है कि नहीं? तो mass of circular slice is equal to total area of circular slice into mass per unit area. So that will be the mass. So yes, तो इस सर्कुलर स्लाइस से अब ये सर्कल से उसका डिस्टेंस P का डिस्टेंस कितना है x है कि नहीं? ये सर्कुलर फॉर्म में है, इसके किसी भी पॉइंट से हम डिस्टेंस लेंगे तो वो x ही रहेगा है कि नहीं? ये सर्कुलर फॉर्म में है तो इसके किसी भी पॉइंट से हम डिस्टेंस लेंगे तो दैट विल बी x. तो ये देखो, जैसे मैंने सर्कुलर स्लाइस बोला है, ये सर्कुलर स्लाइस ये ऐसे दिखेगा, तो इससे किसी भी पॉइंट से हम इसका डिस्टेंस लेंगे तो दैट विल बी x, यानी ये इतना ही रहेगा. ये जो x दिख रहा है इतना ही, मतलब इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस x रहेगा, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस x रहेगा, इस पॉइंट से भी इसका डिस्टेंस x रहेगा, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है ऐसे. ओके, सो dv इज इक्वल टू माइनस gm अपॉन डिस्टेंस कितना है x. तो हम ये सर्कुलर स्लाइस का स्लाइस के वजह से इट इज द पोटेंशियल कैलकुलेटेड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस सर्कुलर स्लाइस. ओके, तो दैट इज गिवन बाय dv इज इक्वल टू दिस मच. तो अब ट्रायंगल OCP देखेंगे. ट्रायंगल OCP, इसमें क्या लिख सकते हैं हम? एक्स स्क्वायर, तो ये आपका डिस्टेंस x है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये OC इज इक्वल टू a, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये डिस्टेंस है कि नहीं, डिस्टेंस r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, ये एंगल है 2ar cos थीटा. तो ये कोसाइन लॉ बोल सकते हैं हम इसको. तो दिस इज द फार्मूला वी कैन राइट. चेक कर सकते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा व्हेन थीटा बिकम्स 90 डिग्री. पाइथागोरस थ्योरम लाइक दैट. तो अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा इस तरह से. ठीक है, तो साइन थीटा डी थीटा अपॉन एक्स है कि नहीं, साइन थीटा डी थीटा अपॉन एक्स. एक्चुअली ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर, इसका हम डिफरेंशियल लेंगे तो क्या मिलेगा? 2x dx इज इक्वल टू, ये a क्या है? कांस्टेंट है, r क्या है? कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 2ar साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा है कि नहीं. डिफरेंशियल इसका एक स्टेप अपन बाद में लेते हैं. यहाँ पर देखो 2x dx इज इक्वल टू 2ar साइन थीटा डी थीटा, बिकॉज टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ दिस इक्वेशन, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, और ये cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस साइन थीटा डी थीटा. तो इसके ऊपर से अपन लिख सकते हैं साइन थीटा डी थीटा अपॉन एक्स इज इक्वल टू dx अपॉन ar. ये इधर जाएगा, 2 कैंसल्स, तो dx अपॉन ar इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा अपॉन एक्स. तो ये साइन थीटा डी थीटा अपॉन एक्स का वैल्यू
यहाँ पर पुट करेंगे साइन थीटा डी थीटा अपॉन एक्स का वैल्यू यहाँ पर ये dx by ar पुट करेंगे तो यू विल गेट द एक्सप्रेशन लाइक दिस। तो dv इज इक्वल टू माइनस जी 2 पाई a स्क्वायर रो dx by ar। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये एक्सप्रेशन मिल गया हमको इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x हमको एक्सप्रेशन मिल गया। ये a क्या है, कांस्टेंट है, r भी डिस्टेंस फिक्स है, तो हमको ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब ये रो क्या है, सरफेस डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब हम फाइनल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, तो दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर स्लाइस एट पॉइंट P। तो अगर हमको टोटल पोटेंशियल लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कहां से कहां तक, लिमिट उसके r कहां से कहां तक वेरी है, r इज वेरिंग फ्रॉम r प्लस a टू सॉरी r माइनस a टू r प्लस a, है कि नहीं। हमारा जो रेडियस है लाइक दिस, तो इस तरह के सर्कुलर स्लाइसेस कहां से यहां तक है, यहां से ये पॉइंट कौन सा है, दिस पॉइंट इज, दिस इज r माइनस a, क्योंकि ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस a है, तो दिस इज r माइनस a से लेकर यहां से यहां तक r प्लस a तक। तो ऐसे सर्कुलर स्लाइसेस जो है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम दिस पॉइंट B टू दिस पॉइंट A। ऐसे सर्कुलर स्लाइसेस, sphere is consist of such circular slices, vertical slices from B to A, and at B it is r minus a and it is r plus a. Okay, so that will be equal to, so integrating from r minus a to r plus a, so if you integrate that between the limits r minus a to r plus a, you will get the expression like this. Okay, so v is equal to minus 4g pi a square rho upon r. Now but 4 pi a square rho है कि नहीं, 4 pi a square is the surface area of sphere and rho is the density, surface density. तो density into area is equal to mass. So if you replace that, so you will get the expression for potential is equal to minus gm by r. Okay, so this is the expression for potential, and therefore for the expression for intensity it will be like this, minus dv by dr is equal to minus gm upon r square. So these are the expression for the potential and intensity due to spherical shell. Okay, now if P is on the surface, if the point P is on the surface, so V will be equal to minus gm by a and E will be equal to minus gm by a square. Now if P is inside the spherical shell, rest all the things will be same, the circular slice and so on. Only the difference is rest all the things are same. We have calculated the radius of circular slice, circumference of circular slice, area of circular slice. Okay, rest all the things are same because P is point inside the sphere. So this is the distance, say x. Okay, and here the distance r e with, this is the distance r which is less than a. Okay, so the difference here is only limits of integration. Limits of integration, initially it was r minus a to r plus a, here a minus r to a plus r. So if you just change the limits of integration, you will get the answer as, say, yes, final answer will be, here it is minus 4g pi a rho upon r into r cancel, because after putting the limits you will get the value of r here, because a cancels here. In the initial integration it is the term r cancels, but here a cancels,
So therefore R remains, R cancels with each other. So here to adjust this 4 pi a square, we have put the a in the denominator, and also we can write 4 pi a square rho is as equal to m. So finally you will get V as minus gm by a, and E is equal to minus dV by dr is equal to 0. So electric intensity on the surface of gravitational intensity on the surface is 0. Inside surface is 0, and gravitational potential inside sphere is minus gm by a. Okay. So let us just put that in a tabular form. So gravitational potential inside spherical shell, on the surface of shell, and outside spherical shell. So these are the values. Okay. So here on the surface and inside it is constant, it is same. Outside spherical shell it may vary with distance r, and gravitational intensity, it is 0 inside spherical shell. On the surface it is some value, say minus gm upon a square, and gravitational intensity again it varies as r, as given as this expression. So graphical variation, it is very important. The variation of potential is like this. So this is the 0, or say from the center O of the sphere, the gravitational potential remains constant. Its value is minus gm by 8, it's constant. And when it comes on the surface, and from the surface it reduces like this. Okay. So from the surface, as r increases, so this is the r, and r increases, it increases like this. Okay. As it is the negative value, we have taken it from the negative side of y-axis. Okay. So it goes like this. And for the gravitational field intensity, it is 0 inside the sphere. At the surface it is minus gm upon a square. This is on the surface, minus gm upon a square, and again it varies as r as we go away from the surface like this. So this is how gravitational potential and intensity due to spherical shell varies. Okay. So in the next class we'll see the gravitational potential and intensity due to solid sphere. Okay.